Good morning, students. I hope you studied. In last session, we completed theoretical framework unit number 1. In unit number 1, we have seen what is the accounting, definition of accounting. So accounting is nothing but it is recording of transactions and interpretation of these transactions. Accounting is a language of business. So we will quickly revise what we have covered in the last session. So number 1, transactions. Transactions means any economic activity which is happening is called as transaction. So it is a performance, that is you purchase, sale something is called as transaction. And end results for calculation of profit, closing stock is called as event. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing of transactions and events of financial characters and interpret results thereof is called as accounting. So accounting process input is basically divided in 5 parts. One is recording, second one is classifying, third one is summarizing, fourth one is analyzing, and fifth one is interpreting. And communication is called as output. Communication is in way of annual reports. It might be for internal users, it might be for external users. Then we have seen objectives of accounting, that is a SAP to know is a memory technique. S for systematic recording of transaction. A is ascertainment of results. A is ascertainment of financial position. P is providing information, and to know is a solvency position. So these are objectives. Then we have seen what are functions of accounting. MFDC को control करता है and taxes pay करता है. So M for measurement, F for forecasting, D for decision making, C for comparison and evaluation, then control, and last one is government regulation and taxation. After that, subfields of accounting, that is financial accounting, cost accounting, management accounting, then social responsibility accounting, and last one is human resource accounting. Then you have accounting disciplines, accounting relationship with other subjects, that is other disciplines, economics, law, management, then mathematics and statistics are different disciplines. We have seen their relationship with other subjects. And last one, what are roles of chartered accountant? That 12 roles I explained you: financial advisor, arbitration, liquidation, then books of accounts, regular books of accounts, maintaining books of accounts, then auditing, internal audit, statutory audit, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सो कंट्रोल्स देना, ये सभी ये हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल देखा था सोसाइटी में. सो दिस इज ऑल फॉर यूनिट नंबर 1. एक आशा करता हूं आप सबने पहला यूनिट डिटेल में किया होगा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो जल्दी से आ जाइए. अवधेश प्रताप जी ने सबसे पहले गुड मॉर्निंग लिखा था. निकिता, तरुण, जिनल, भरत जी, वंदना जी, निकिता, यस, लकी बेटा, जानवी, राज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो जल्दी से आ जाइए. बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से गुड मॉर्निंग लीजिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी unit number 2. Which unit we are going to see today? Unit number 2. My voice is audible beta, properly audible hai? Yes friends, chaliye. So now today we are going to maintain in notebook. This is unit number 2, accounting concepts, principles and conventions. So in today's session, we are going to see accounting concepts, then principles and conventions. Let's start. So first thing in your mind, sir, what is our objective? Our objective of accounts is to prepare financial statements. Remember, so financial statements means what, sir? So write down. So write down first unit number 2,
accounting concepts, yes, conventions, principles, and conventions. Write down unit number, last day revision notes. I already explained you. You have to maintain 100 pages ki notebook. Okay. So every one of you will maintain 100 pages ka notebook for these theory questions. And last day revision notes I am giving you in the writing. तो आपको मैं last day revision notes लिख के दे रहा हूँ. I hope every one of you are writing in the last day revision notes. तो आप सबको कहाँ पे लिखना है ये last day revision notes में? जल्दी से लिखिए. Financial statement. So first thing, what you have to write. So first, before starting this session of unit number 2, see, these sessions are purely theoretical sessions. Even name of this chapter is theoretical framework. Why these chapters are important? That today you are going to understand different concepts, principles, conventions. So what exactly it means, that I will tell you in today's session. Okay, everyone is ready, beta? Where are you writing, all of you? Okay. Financial statement. सर इंडेक्स की जरूरत नहीं है 100 पेजेस के नोटबुक को. देयर इज नो नीड, और यू कैन प्रिपेयर इट ऑन द फर्स्ट पेज itself. Index. Financial statement. Write down. It is P&L account, that is profit or loss account, to know performance, balance sheet, to know financial position, to know the financial position we prepare balance sheet. Then cash flow statement. P&L means profit or loss account, science background students. Balance sheet, BS, is a balance sheet. Cash flow statement. So this is inflow and outflow of cash. We can identify this. It has 3 elements. There are 3 activities in cash flow statement. There are 3 activities. Number 1, O, operating activity. I, investing activity. And last one is a financing activity. So there are 3 activities in cash flow statement. And last statement is, so this is cash flow statement. How many activities are there, beta? 3 activities. And last one is notes to accounts. Notes to accounts. So these are policies adopted by organization. We write it in notes to accounts. Where we write it? In notes to accounts. Which policies we are adopting? We write it in this financial statements. So financial statement consists of 4 parts: P&L, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts. P&L, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts. So beta, every entity presents has to maintain this financial statement. They have to prepare. They have to prepare this financial statement. And this financial statement is P&L, balance sheet,
cash flow statement, and notes to accounts. Okay. चलिए, second question. Yes, beta. Anishkarya, if you want to give me some, ask me some questions, so you can ask me by sending questions on that tab. Sir, whether syllabus can be covered before 30th November, beta, how it is possible? 30th November के पहले कैसे होगा? निकुंज जी, आप ही मुझे बताइए. अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, 4 months बैच फॉर जून एग्जाम. 100 पेजेस के नोटबुक में अभी लिखना है आपको. दीज आर थ्योरी नोटबुक. 400 पेजेस के नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. तो अभी ये 100 पेजेस के नोटबुक में लिखना है. चलिए, तो आई विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ. Why these accounting principles, concepts, and conventions? Beta, if I appoint 4 accountants, how many accountants if I appoint? 4 accountants. Assume, yes, X, Y, Z. Suppose 5 accountants, A, B, X, Y, Z. So A, if I ask you to write, I have given them information about my business. मैंने मेरे business का information उनको दिया. I have given them file. Okay, क्या बोलते हैं इसको? फाइल देना. क्लाइंट को फाइल दिया. क्लाइंट ने फाइल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को. ओके, सो क्लाइंट की फाइल मेरे पास आती है. सपोज मैं क्लाइंट हूं and you 5 chartered accountants are there. Suppose if I ask you to find out profit or loss of my business, I am giving you assurance that all of you will give me different profits if there is no consistency in maintaining records. Okay, so in our syllabus we have concept, principles, conventions only for no confusion while preparation of financial statements. So that balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to accounts. There might be some difference of opinion is okay. But beta, totally different accounting is not acceptable. And that's why we have to understand some basic fundamental assumptions, some concepts. That concepts are universally applied. Okay, it is not only for in India, and some traditions which is called as conventions. Okay, that is applicable for your country. Okay, so conventions are applicable for respective country and concepts are universally applied. See the difference, because this is very technical session, and this session is important one from exam point of view. Theory question might be for 4 marks. So please don't leave this chapter in option. Once you got the logic of this chapter is really very interesting chapter. Okay, but suppose if you don't understand basic concepts behind it, why this chapter is introduced. So first thing I'm telling you, why this chapter? Every time I will start with why this chapter. So why this chapter? Logic is very simple. Suppose if you are maintaining financial statement, you are chartered accountants, and if you want to maintain financial statements, that balance sheet, profit and loss account. चलो जल्दी जल्दी चारों के नाम लीजिए. P&L, balance sheet, cash flow statement, and notes to accounts. चलो once again, P&L, balance sheet, notes to accounts, cash flow statement. Okay, so these 4 are our financial statements. And while giving this financial statement, while writing this financial statement, understand, we do not have any confusion. We should not have any confusion while maintaining this principle financial statements.
and that's why we are following these concepts and conventions. What is the difference between concepts and convention? In simple language, concepts are universally applicable, and conventions are बेटा ट्रेडिशंस. सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा तो देखो, फ्रॉक ये हमारे इधर इंडिया में भी नहीं और आउटसाइड इंडिया भी लड़के नहीं पहनेंगे, सो दिस इज यूनिवर्सली अप्लाइड. ओके, बट वही चीज अभी हर एक को आपको पता है कि बाय आपका जो हर एक का पहराव जो है वो ट्रेडिशंस इंडिया में अलग रहेगा. हम लोग साड़ी पहनेंगे, तो बाहर जाने के बाद यस कंट्री वाइज अलग रहेगा. सो बुरखा जो रहेगा वो इस्लामिक कंट्रीज में रहेगा. सो ये जो है ना, दिस इज अ ट्रेडिशन. तो ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? कन्वेंशन. ऐसे याद रखना. जो जहां पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल है, दैट इज कॉन्सेप्ट. राइट डाउन इन द comment section. Don't write it in the notebook. I am going to give you definition of this. So concepts are universally applicable. Okay, and traditions, conventions are traditions. Okay, so what are accounting concepts? Basics, norms and assumptions on which accounting system has been developed. So these are the assumptions. So which assumptions? Yes, just remember the word. These are the norms and assumptions on which accounting, yes, write down accounting concepts. Yes, I'm giving you the definition. Accounting concepts. Basis, norms or assumptions on which financial statements upper. Okay, so FS, now I will write it as FS for financial statements are prepared. Got the logic? So accounting concepts are basis, norms or assumptions on which financial statements are prepared. We are going to understand this, okay? Don't worry. And accounting conventions. Accounting conventions after one line, accounting convention, customs or traditions or guidelines used over a period of time, in preparation of FS. In preparation of FS. Here by red pen you can write accounting concepts universally accepted, and here in convention not universally accepted. See, it's a tradition and this is basis, assumption, norms. Okay, so why there is need of assumption? Yes, I will tell you it later. Wait for some time. We are going to start it very soon. So accounting concepts ये जो होते हैं वो basis होते हैं, और accounting conventions ये आपके universally accepted नहीं होते हैं. Number 4, very very important definition. Accounting principles. Better you can check. I have already uploaded these notes. Accounting principles.
नॉर्म्स मीन्स बेटा स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स मीन्स स्टैंडर्ड्स, रूल्स बोल सकते हो, ओके। नॉर्म्स मतलब स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स और स्टैंडर्ड्स which are adopted while preparation of financial statements. So this is selection in simple language. This is selection of accounting policy. What it's called as selection of accounting policy. Accounting principle means which policy you are selecting. Okay. So those who have done inventory, first in, first out. Now you will understand it afterwards, beta. First in, first out, or weighted average. So which policy you are selecting is called as accounting principle. So you have to mention if we are using this policy while preparation of financial statement. Example देके रखता हूँ, रेड पेन से लिखना, FIFO oblique weighted average, inventory valuation. You won't understand it now, but in simple language, suppose there are two ways, okay, two ways to reach to your home, okay. So which way you are following, whether shortcut but having बहुत सारे गड्ढे वो रोड पे रहेंगे, or plain road though it is a long cut, okay. So this is how, so which policy you are selecting is called as accounting principles, rules or standards which are adopted while preparation of financial statements. So till now, any confusion? Yes, beta, any confusion till now? You understood all these three words? Okay. Chaliye. So let's move to next one. Accounting principles, I already told you which selection of accounting policies. Accounting conventions, already explained you, these are traditions, not universally applicable. So let's understand one by one concept. Yes, understood perfectly. Chaliye. No confusion. So now we are going to start with concepts. चलो तो जल्दी से concept की definition आपको याद करनी है, convention and tradition. But now principles. So convention and principles. Now these words are used interchangeably. So first concept. Business entity concept. Chalo, write down. Fifth one. So now we are starting with number 5. We are starting with different concepts of this chapter. Okay. While preparation of financial statement, again telling you, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है, समझ गए? तो हम लोग हमेशा लिखेंगे नहीं, वी आर फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट्स while preparation. Okay, so while preparing financial statement, we are following these concepts. ये इसका मीनिंग है. In simple language, आपको मैं इतना ही बोलता हूं कि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये इसी तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या बताया? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल. सो यहां पे मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं. Now these words are used interchangeably, but there is difference in all three words, but you can use these words interchangeably.
Number A, business entity concept. C, write down business entity concept. First one. First one is a business entity concept. Yes. So business entity concept talks about business business. Now this is universally applied. So this is a concept. This is not the convention. Okay. Business and businessman are different. So owner and business are different. We have to think from business angle, business view, business point of view. So beta, now very simple. Businessman has paid you 1 lakh rupees cash to the business. So see here, I will explain you the concept. So here is the owner, and here is business. Owner has invested rupees 1 lakh. So for owner, it is an asset. Investment is an asset. But for business, it is a liability. Business has to return this. And we have to think it like business. We will record it as liability. Remember. So it is called as capital contribution. So business has to return this money. Business has to return this money. So for business, it is a liability. So we always think from whose perspective? To always think from business perspective, not businessman के angle से. Okay. So what is business entity concept? Business entity concept एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. हिंदी में इतना ही मैं बताऊंगा कि आपका बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग लोग होते हैं. सो बिजनेस, ये आपको एंगल जो है ना, बिजनेस के एंगल से एंट्रीज देखनी है. तो ओनर ने 1 लाख रुपए दिया, तो मैंने 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस में डाला, तो मैंने तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया. पर बिजनेस के एंट्रीज हम लोग देखने वाले. तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके देख रहे हैं? ओनर के नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे. हम लोग बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे. हम लोगों के एंगल से बिजनेस. तो आपको यूनिवर्सली ये चीज याद रखना है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो ओनर्स का अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो. आप किसका अकाउंटिंग कर रहे हो? बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. चलो, सो we'll read it quickly. Entity concept. Business is a separate identified from its owner, helps in keeping business affairs free from influence of the personal affairs. So personal affairs नहीं, हमें business के transaction देखने, and even businessman के own transactions हम लोग record नहीं करेंगे. हम लोग सिर्फ business के transactions record करेंगे. Okay? चलो, second one, money measurement concept. Second concept, money measurement concept. Now, what is this concept? Universally applicable. Money measurement concept. So those terms, those transactions which can be measured in terms of money, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. Transactions are recorded only if measure in terms of money. Measure in terms of money. Therefore, इतना याद रखो कि इसीलिए हम लोग ह्यूमन वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ह्यूमन वैल्यू कांट बी रिकॉर्डेड. इसी का एग्जाम्पल है. ह्यूमन वैल्यू कैनॉट बी रिकॉर्डेड. आई कैनॉट रिकॉर्ड my office boy as an asset. Why? Because
I do not have control over it. And second one, I cannot measure him in terms of money. You got this logic? So money measurement concept. Have you written money measurement concept? Yes. Money measurement concept. Last revision ke liye. Employees are not as assets, but their measurement is not in terms of money, so cannot be recorded in the books. And measurement in which currency in India is measurement. A respective country will record in their transaction in money. In India, it will be in rupees. So in India, it is measured in terms of rupees. In USA, in dollars. So money denomination is different from different countries. So, but universally, everyone will record transaction in their home currency. Okay. So सभी लोग उनके home currency में इसको record करेंगे. ज्ञान प्राप्त हुआ आपको पूरा money measurement concept. Money measurement concept. Yes. In exam, beta, I am giving you these words. Salary to employees expenses. You cannot record as an asset. तीसरा, periodicity concept. Write down. Periodicity concept. Periodicity concept. Life of business is divided. See, break your sentences to recall it. Life of business is divided into small parts. Usually, year. In India, beta, 1st April to 31st March. In India. So, periodicity concept. So, it will help you. So, for comparison, it is helpful. So you can find out the profit of last year and you can compare it with the current year. So profit of last year can be compared with current year. It's possible only if your life of the business is divided in small parts. So universally, though different years are there. Now in India, it is 1st April to 31st March. Outside India, maybe a different financial year. So periodicity concept talks about your life of the business is divided into different parts of the year. Okay. So 1 year, normally we take it. So periodicity concept talks about financial year in India. Okay. So periodicity आपको एक साल में divide करना है. I hope you got this concept. Okay. So comparison is possible, uniform and consistent accounting treatment is possible, and matching principle is possible due to periodicity concept. You can read this theory. चलो जल्दी से ये theory खुद से read कर लीजिए. Also called as concept of definite accounting period. As per going concern concept, indefinite life of entities assumed. Okay, so business will continue for foreseeable future. But here we divide this for 1 year. It may be 6 months, 9 months, or 14, 15 months. In India, it is from 1st April to 31st March. So comparing financial statement of different period is possible. Uniform and consistent treatment and matching concept. So abhi uniform and consistent we will see afterwards. Matching also, there is one concept which is called as matching. So beta, ये प्योर थ्योरी है और आप लोगों को ये लिखना रहेगा. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स. ओके, सो 4 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर बहुत जरूरी है. एंड एज इट इज यू कैनॉट राइट थ्योरी इन एग्जाम, सो इट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन्स. प्लीज ट्राई टू लर्न दिस इंपॉर्टेंट लाइन्स. ओके, आई एम गिविंग यू ऑल दिस नोट्स. रेडीमेड मैगी बना के दे रहा हूं. ठीक है, चलिए नंबर डी. चलो नेक्स्ट वन, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ओवर. एक्रूअल कॉन्सेप्ट. चलो राइट डाउन एक्रूअल कॉन्सेप्ट.
Now, this is very, very important. Accrual concept talks about expenditure which are incurred while maintaining your financial statements. Expenditure has to be recorded on the basis of incurred and not on the basis of payment. Payment, no. And income, this is very, very important concept, is recorded on the earned basis and not on the basis of receipt. Okay. So expenses and income, we record it on which basis, beta? Accrual mein, when they occur. When transaction occurs, we record it and not on the basis of irrespective of receipt or payment. Okay. So when it is expenditure incurred, sir, give me example. See, my office boy is working from the month of April to March. He worked for 12 months. Salary accrued for 12 months. Very, very important concept, beta. This is the heart of accounts. Okay. But I paid him salary of 11 months. Payment of salary paid is of only 11 months. 1 month I will pay in the month of May. Okay, sorry, April. So normally, if he works in the month of April, so see, if he works in the month of April, I pay salary in May 10. Okay, for working in April, I pay salary on May 10. For May, I pay it in June. Okay, so I started my business in 1st April, on 1st April. So I paid him salary of only 11 months. March महीने का salary अभी भी बाकी है. March month salary is still outstanding. Now tell me, should I record expenditure for 12 months or 11 months? Okay. So tell me logically, I paid only 11 months salary. He worked for 12 months. So expenditure is of 12 months or 11 months? Tell me fast. Yes. Aditi Salvi is saying 11 months. Anju Banu is saying 11 months. Etasham is saying 11 months. What about other students, beta? Correct answer is 12 months. Beta, this is the accrual concept. Accrual concept talks about 12 months and 11 months is not the expenditure. Correct answer is I will record expenditure for 11 months. No, I will record expenditure for 12 months because he worked for 12 months, accrued for 12 months. Payment भले 11 month का हुआ पर खर्चा 11 महीने का दिखेगा. एक महीने का सॉरी खर्चा 12 महीने का दिखेगा, पेमेंट 11 महीने का एंड आउटस्टैंडिंग एंट्री 1 महीने की दिखेगी. 1 महीने का पेबल दिखेगा कि 1 महीने का पेमेंट करना बाकी है पर खर्चा 12 महीने का दिखेगा. इसी को तो बोलते एक्रूअल कॉन्सेप्ट. दिस इज हार्ट ऑफ द अकाउंट्स talks about accrual concept. Accrual concept is nothing but you will record your income. Now, I will give you one more example. FD, fixed deposit. I invested in one FD on 1st of October. Okay. 1st of October 2020. And I will get interest on 30th September 2021. Can you tell me
for financial year 2020-21. Now, this is how you record your financial year. Financial year starts from 1st April 2020 and 21 is a 31st March 21. So, I'm going to receive interest on 30th September 2021. Means, see. I will draw the diagram. 1st April 2020, I invested in the FD. This is FD of rupees 1 lakh. Sorry, here is not a date. 1st April up to 31st March is your financial year. I made FD. I invested in FD on 1st October 2020. Rupees 1 lakh in FD. And interest I will get rupees 10,000. Assume 12% interest on 30th September 21. So interest received. So when should I book my income? Book income. When? Yes. कितना income book करना है? Can you tell me? Should I now this financial year? This is now year 21-22. When I received the interest, book income. Option 1, 21-22 directly, or option 2, 2020-21 and 21-22. So which option is correct? Yes, tell me fast. Yes, I can see your message. So tell me fast, how you are going to book this income? Option 1 or option 2? Some students are answering option 1. Option 2 is a correct answer, not option 1. 6 months and 6 months in 21-22. 6 months how? 1st September 20 to 31st March 21. And here 1st April 21 to 30th September 21. So beta, this is accrual concept. Option 2 is called as accrual. Though you have not received, but it is accrued. 6 months ka accrued hua, earned for 6 months and received after 12 months. Okay. So earned is important and not received is important. ठीक है? समझ में आया आपको? So you can write this example of fixed deposit and tell me over after writing this. Accrual concept is very important. चलो लिख लो. Salary is example 1. Salary is example 1. Write down. Those who have not written, write down fast. Option 2 is a correct answer. 6 months, 6 months. It is called as earned, not received. So every one of you, expenditure we record on incurred basis. That is 12 months expenditure. Well, payment is of 11 months. No, we will record expenditure for 12 months. This is accrual concept. And this is heart of accounts. Accrual is very, very important concept in accounts. Yes, rectify your answer. बेटा मैंने एफडी किया 1 अक्टूबर 2020 को. मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर में 1 साल बाद, पर मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को. तो 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे अब भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा किशन जी, और 6 महीने का इंटरेस्ट मैं नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करूंगा. इनकम भले मिला बाद में, कैसे रिकॉर्ड करना है हम लोग बाद में देखेंगे, पर
पर इतना याद रखो कि मैं इनकम कैसे बुक करूंगा, 6 महीने का इनकम में रिकॉर्ड करूंगा। इस साल 6 महीना, नेक्स्ट ईयर 6 महीना। ओवर। फिक्स डिपॉजिट का एग्जाम्पल लिखो। फिक्स डिपॉजिट एग्जाम्पल, accrual concept is heart of accounts। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स होते हैं बेटा। शक्ति जी, 6 मंथ्स। Those students who are not attending it in the live session and those who are not answering to my questions, beta, you are not active students। यश बेटा देख, मैंने 1 अक्टूबर को एफडी की। ध्यान देना बेटा, बहुत सिंपल है। 1 अक्टूबर 2020 को मैंने एफडी किया 1 लाख रुपए का, और ये एफडी मुझे मैच्योर कब होगा, 1 साल बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर में जाएगा। पर बीच में कौन सा डेट आने वाला है, 31 मार्च। तो 6 महीने का इंटरेस्ट मैं अब भी बुक करूंगा, भले पैसा बाद में मिलने दो, इनकम अब भी बुक होगा। एंड 6 महीने का, ये देख, यहां से यहां तक 6 मंथ्स होते हैं और यहां से यहां तक 6 मंथ्स होते हैं। तो 6 महीने का इनकम इस साल बुक करूंगा और 6 महीने का इनकम नेक्स्ट ईयर बुक करूंगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो 6 6 महीने का इनकम मैं बुक करूंगा। इस साल कितना महीने का इनकम बताऊंगा, 6 मंथ्स। कैसे करना है बाद में मैं बताऊंगा, पर इतना समझ लो, दिस इज कॉल्ड एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हिंदी में भी बता दिया। कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर हिंदी में बताइए। यस, अनुष्का मैंने बता दिया ऑलरेडी। बट रिसीवेबल, सो इट विल बी रिकॉर्डेड। यस बेटा, यस तनीषा, यू आर करेक्ट। ईयर एंड होने के टाइम पे बेटा आप लोग है ना फोकस कीजिए। पहले ही मैं बोल देता हूं, आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली प्लीज। आपके दिमाग में से बाकी सभी चीजें हटा दीजिए। आप सभी कॉन्सेप्ट्स करते टाइम मैं पहले ही बोल देता हूं। और रिकॉल करने का तरीका कैसे होता है, इफ योर फैकल्टी इज गिविंग यू, शोइंग यू द वे, आई एम योर मेंटोर, आई एम नॉट योर ऐसा हार्ड ये टीचर नहीं हूं कि मैं आपके पास से पूरा करवा के लूंगा। नाउ यू आर एट डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। तो आप लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। And how to revise that I will tell you. This is how you are going to revise it. Write down all important points. Try to understand the concept. Sir will explain you the concept. He has given you everything for last day revision. Now your duty after understanding this, you will read my notes also, otherwise my study material, yes, institute study material, from which you will get this information. So beta, some lines are difficult to grasp. So see the important lines, okay? Try to grasp these concepts. And after understanding, for example, now what is your duty? Yes, I will explain you. अभी आपका काम क्या रहेगा, जस्ट बताता हूं मैं। आपका काम क्या रहेगा वही एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, अभी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, यूनिट 2 स्टडी मटेरियल, जस्ट विल शो यू। नाउ इंस्टीट्यूट हैज गिवन यू एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है? थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा। नाउ आई हैव गिवन यू द शॉर्टकट, okay? Now it will take some time and that is why CA course is difficult. I am here to show you only the way. अभी देखो, ये आपको एग्जाम में जाने के पहले, अभी ये you have to read this, so you know what is accrual concept. Now while reading, under accrual concepts, the effects of transactions and other events are recognized on mercantile basis. So see, mercantile basis, हाँ ये लिख के देना रहेगा यार। Mercantile basis is a keyword. Mercantile basis. This accrual concept is also called as mercantile basis, in which when they occur and not when you received or paid. Hare, sir already explained this. And when they are recorded in accounting records and reporting. So occurrence is important in the financial period of that period which they relate. हाँ, एफडी का बताया था, 6 महीने का इनकम अब भी बुक होगा, 6 महीने का इनकम बाद में बुक होएगा।
Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only the past events involving the payments and receipts of cash, but also the obligation to pay cash in the future and of resources that represent. So past में जो पेमेंट किया वो जरूरी नहीं है, फ्यूचर में जो पेमेंट करने वाले हो पर इस साल से रिलेटेड होगा तो भी आपको पे करना पड़ेगा. To understand the accrual assumptions of revenue and expenses is required. Revenue is the gross inflow of cash. Revenue means income and other consideration arising in the ordinary course of business from sale of goods or from rendering of services. So beta, this is the definition of revenue. Revenue is accounting standard 9 has given this definition. So what is revenue? Revenue means what? Revenue means what? Revenue means gross inflow of cash. जो भी पैसा मुझे मिलेगा, receivables मिलने वाला है, and other considerations किसके वजह से मिला? क्योंकि मैंने कुछ बेचा या कुछ सर्विस मैंने रेंडर किया या कुछ रिसोर्सेस मैंने इंटरेस्ट इज माय इनकम. ओके, तो कुछ रिसोर्सेस. नाउ दिस इज वेरी टेक्निकल डेफिनेशन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रीड माय नोट्स. ओके, तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा तो आप मेरे नोट्स को रीड कीजिए. Mr. X started cloth merchandising. He invested 50,000, bought merchandise of rupees 50,000. He sold for 60,000. So customer paid him only 50,000 and 10,000 is shortly he is going to receive. So his revenue 50,000 कैश में मिला and 10,000 मिलने वाला है. फिर भी उसका इनकम कितना होगा? 60,000 because he sold goods of 60,000. Okay. So these are some examples which are given for expenses and income. And you have to read this from the study material. Understand the concept. It's technical and we made it easy for your understanding purpose. चलो, अच्छे से समझा? Next one. ठीक है सर, अभी तक का तो समझ में आया. सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड इनकम अर्न्ड. ओके, एंड बेटा प्लीज डोंट स्किप अ सिंगल चैप्टर इन द ऑप्शन. though you are finding it difficult, but the way I told you the entry, or suppose how I explained you what is concept, convention, it's been very simple way. तो सोचना भी मत कि ये मुझे, और कोई भी चीज को है ना ये मत बोलना ये बहुत डिफिकल्ट है. ऑलवेज टेल टू योरसेल्फ इट्स सिंपल, इट्स सिंपल, इट्स सिंपल. ओके, तो ही आपको फायदा होगा. ठीक है, चलिए. Now we are moving to next concept. So I have given you notes. Accrual concept on mercantile basis. Matching concept. Okay. Mercantile is a name, beta. Accrual का दूसरा नाम है. We are going to write this. Mercantile is a second name. जैसे आपका नाम रहेगा घर में कुछ अलग रहेगा. So accrual concept का ही दूसरा नाम क्या है? It is called as mercantile basis. Red pen से लिख सकते हो. Mercantile. This is a second name. Mercantile is a second name of accrual concept. Okay, बेटा शिवम. बेटा आनंद गुप्ता जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करते. बीसीआर और बीसी के बाद में चालू होंगे ये चीजें ना, यही मुझे नफरत है बेटा कि आप जो चल रहा है ना, यू आर सीए स्टूडेंट. व्हाट सीए टॉक्स अबाउट? सीए टेल्स यू अबाउट डिटर्मिनेशन, डेस्टिनेशन. आपको ये सब आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. अभी चल रहा है अकाउंट सब्जेक्ट, आपके दिमाग में चल रहा है बीसीआर बीसीके का क्या है. मतलब ये चीजें ना एट फाउंडेशन लेवल में से ये सब उड़ने वाले बच्चे हैं कि जो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिनका बेस. और आई एम फर्स्ट डे से आई एम टेलिंग कि दिस सिलेबस ऑफ फाउंडेशन इज वेरी इजी, बट यू हैव टू फोकस. बट स्टूडेंट्स डोंट वांट टू फोकस. नाउ आप ही देखिए कि आपके मन में कितने यहाँ पे चीजें चल रही है. अभी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं, मेरे सामने एक ही दिख रहा है, अर्जुना जैसे वो एक आई दिखता था, उसको बस उतनी आंख दिखनी चाहिए आपको. My aim is only accounts. I will learn these concepts today. I will read this theory and I'm going to pass in the exam. अभी ये कौन भाई साहब है, इनको कौन सा टेंशन, तो बीसीआर कब चालू होगा, बीसी के कब चालू होगा, मतलब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन.
और ये चीजें ना, ये फाउंडेशन बच्चों में ज्यादा होती है। फाइनल के बच्चों को ये बोलना नहीं पड़ेगा, दे आर नॉट गेटिंग टाइम, दैट इज द कंसर्न फॉर देम। फाउंडेशन में इतना टाइम है, फिर भी यू वांट टू वेस्ट दिस टाइम। वापस मैं चिल्लाऊंगा नहीं, पर ये ऐसे वाहियात क्वेश्चंस पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कीजिए। 8 घंटे ये पहले दिन पे जान लीजिए, सीए बनना है तो, नहीं तो चूज अदर कोर्सेस। जानना है तो आज ये ध्यान दीजिए कि जो भी मैं पढ़ूंगा वो शिद्दत से पढ़ूंगा, बिल्कुल भी उसमें मैं टाइम पास नहीं करूंगा। अभी मैं पढ़ाते टाइम मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही है कि आज मेरा क्लाइंट आने वाला है, या मेरे दिमाग में ये चल रहा है ये बैच मुझे लेनी है, ये चल रहा है वो चल रहा है, नहीं, दिमाग में एक ही फिक्स बात है कि मुझे सिखाना है। आप भी मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना है, एक ही चीज। और ये ना, मुझे फाउंडेशन के 2 स्टूडेंट, और आपको वाहियातगिरी करनी है तो आप लोग दूसरे क्लासेस में जाइए, जो भी प्राइवेट में जिनको पास आपको टाइम पास, हल्ला गुल्ला, गाने, एंजॉयमेंट या क्विज कंपटीशन ये सब मिलता है, और सिर्फ टू दी पॉइंट नहीं रहते, उधर जाइए जो इजी लगता है। वहां से रिजल्ट क्या निकलेगा ये आप आज ही समझ लें। और जो स्टूडेंट को बेस बनाना है वही हमारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए। हम लोग टू दी पॉइंट रहते हैं, इंस्टीट्यूट के क्लासेस है और बोर्ड ऑफ स्टडीज के हैं, तो वो लोग भी सोच समझ के फैकल्टीज को अपॉइंट करते हैं। और ये चीजें यहाँ पे नहीं चलेगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। Sakti ji, you will get break after some time. Please don't ask me for break now. I want to finish these concepts today. Number 3, sorry, which number is going on? A, B, C, D, D over E. E. Write down matching concept. Matching concept means expenditure incurred. Expenditure incurred in the period. Expenditure incurred recorded in the period when revenue is related. When revenue. Now, what is revenue? Revenue means income is related. तो एक्सपेंडिचर उसी साल में रिकॉर्ड होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सपोज I appointed one salesman to sell my vehicles. Okay, so to sell my vehicles, he sold, salesman sold vehicle on 20th March 2020 or 21, and I will pay commission paid in the year, assume 20th April 2021. So salesman sold in financial year 2021 these goods, he sold vehicle, and commission is paid in financial year 21-22. सो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उसने क्या किया, तो उसका कमीशन पे किया। ओके, ठीक है। नाउ नाउ
important point. Financial year 21-22, salesman sold vehicle and commission paid in next year. Now matching concepts talks about, now this commission you have to record expenditure, don't record in 21-22. When you record sales, record this expenditure. Record expenditure in 2021 in which you sold this vehicle. सर भले पेमेंट नहीं किया पर खर्चा रिकॉर्ड उसी साल में करना. सर एंट्री कैसी करनी है बाद में बताऊंगा. एंट्री आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, नॉट टुडे. But this is the concept of matching. Don't wait for the payment date. So when you sold goods, at that time only book your commission as an expenditure. So as a businessman, when I record sales, at that time I will record salesman commission as expenditure. Got this? So salesman commission कौन से साल में रिकॉर्ड करना है? जो साल में सेल्स हुआ. Okay, write down. Write down. Salesman commission record in that year in which you record sales. It is called as matching. Expenditure are matched with income, not amount wise. So sales of rupees 1 lakh and 10% is commission. So 10,000 commission is recorded in that year only. So this is a matching concept. This is a matching concept. Over. Matching concept over. Yes, outstanding commission. जब सोल्व करते हैं तब भी एक्सपेंडिचर बुक करना है. वेरी गुड बेटा. एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर सेम. बेटा फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान दे. फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म होगा तो उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 बुलाते हैं. फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होएगा. एंड कमीशन नेक्स्ट ईयर में पे किया है 21-22 में. चलिए, मैचिंग एंड एक्रूअल आर को-रिलेटेड, इंटर-रिलेटेड. गुड ऑब्जर्वेशन हितेश श्याम जी. मैचिंग and accrual are related to each other. Okay, it is also talking about accrual entry you have to pass here. Accrual entry you have to pass. Both are together. Okay, सिर्फ difference इतना ही है. Accrual don't talk about sold के केस में expenditure book करना है. Accrual सिर्फ इतना बताता है expenditure incurred is important, पर कौन से year से match करना है वो आपको matching concept बताता है. Very good observation. Matching and accrual are interrelated. Next one. Going concern concept. Going concern concept. Going concern concept. Write down. Going concern concept. Carry business. Business will carry. हाँ, कैरी दूसरा कुछ मीनिंग मत लेना, कैरी मिनाती वगैरह. हाँ, कैरी इट्स बिजनेस ऑपरेशन फॉर foreseeable future. Business will continue year after year, year after year. Okay, ठीक है. So business will not stop. What is the meaning? Business will not stop in near future. Near versus foreseeable. Foreseeable मतलब बहुत दूर तक का future. And business will not stop in near future. मतलब जल्दी से stop नहीं होने वाला है. Your business is not going to stop in near future. It will be for next 20 years, 35 years, 50 साल, 100 साल. It is for foreseeable future. Your business is not going to stop.
And this is the basic assumption for every business. And what is the meaning of this? Therefore, assets and liabilities are recorded on cost basis. Which basis? Now cost basis. Now cost basis is a new concept then. Assets and liabilities are cost basis, and when going concern concept affects, therefore going concern concept affect जिस दिन होगा, affect means बंद होने वाला है business, your business is going to shut down. Affects means shut down. Affects means shut down your business. So NRV basis, net realizable value. Now what is net realizable value? That tomorrow I will explain you in valuation principles. So what is cost basis? Today I will explain. Net realizable value, I will explain it tomorrow when your business is going to, tomorrow means day after tomorrow. Okay. So when your going concern concept affects, so NRV basis pe you have to record it. NRV basis. Okay. NRV basis. Beta, when you book your sales, at that time salesman commission is recorded. Though you have not paid that commission is paid in the next year, but you recorded in the last year only, in the year 2020-21, it is called as matching concept. Don't wait for the future when you are paying it. Matching means in that year you will record the salesman commission in which sales is there. Okay, so sales के साथ salesman commission record करेंगे. Tanisha Guhaji, salesman commission is recorded in that year in which sales is booked. Okay, so in the year 2020-21, I will record commission as an expenses. I won't record at the time of payment. Net realizable value, Rama Jaiswalji, net realizable value is a when I am going to receive this money. Now this concept I will explain you tomorrow. Cost basis means what? Now what is next concept? Cost concept. Cost means what? Cost means acquisition price. Acquisition price. At what price you acquire this asset? Acquisition price of asset is called as cost. For example, I bought my flat at rupees 1 crore in 2000. Okay, in 2000 I bought it for 1 crore. Today's value is 2 crore 50 lakhs. So today's value is of no use. Acquisition price is 1 crore. मैंने मेरा फ्लैट 1 करोड़ में लिया था, आज उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपया है. सो आज की वैल्यू उसको मायने नहीं रखती. 1 करोड़ में जो मैंने लिया था उसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. उसको क्या बोलता हूँ? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब एट व्हाट प्राइस आई हैव एक्वायर्ड दैट एसेट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन प्राइस. सो एक्विजिशन प्राइस मींस एट कॉस्ट कॉन्सेप्ट. क्या बोलते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. Next concept, dual aspect concept. Dual aspect concept. Dual aspect. Now from tomorrow, I'm going to tell you this learning concepts. Every debit has credit. Every debit has credit. Now what is this? Debit and credit? Yes, wait for journal entry. So you have to give one, no single effect. You have to give two effects. Every debit has credit. Okay. So what is this concept? For that, universally this is applied. Every debit has a credit. So wait for some time. Yes, dual aspect concept you will understand in the chapter number 2. But this is how you prepared your financial statements. Every debit को credit देना है, तब मेरे financial statements बनेंगे. Dual aspect concept. Conservatism. Now this is very difficult word. Huh? Conservatism or prudence concept.
conservatism or prudence concept. Right now, conservatism or prudence concept. Conservatism or prudence concept. Net realizable value. Net realizable value. Ritu Tiwari. Net realizable value. NRV. Net realizable value. Net realizable value. Every debit has a credit beta. It is called as dual aspect concept. Any entry you are going to pass is called as dual aspect. Conservatism concept, ध्यान दीजिए. Anticipated losses record today. Anticipated profits never record. इसके वजह से क्या हो जाएगा? Therefore, understatement. Write down these words: understatement of asset and overstatement of liabilities. Assets हम लोग कम कर देते हैं और liabilities हम लोग बढ़ा देते हैं, बढ़ा के बताते हैं. See, now I will explain you this concept. Very, very important concept in accounts. Prudence concept. Prudence concept. Yes, beta. Realization concept I will explain. Before that, prudence concept. Beta, prudence concept means what? Suppose if I sold goods to Mr. X, Mr. X to whom I sold goods. So amount is receivable from X. Receivable from X is my debtor. He is my debtor. So receivable from X is my debtor. तो डेटर से मुझे 1 लाख रुपीस आने वाला है. Assume I sold goods for 1 lakh. I sold goods for 1 lakh. But out of this 1 lakh, 10,000, I think he won't pay. My mind is saying he won't pay. By past experience, I think he won't pay 10,000. Still, he is my regular customer. That's why I sold goods for 1 lakh. But 10,000 is my past experience is showing that some people, they are not giving my money on the time, or they will not pay me 10,000, which is called as provision for bad debts. Which is called as provision for bad debts. And this provision for bad debts is nothing but it is RDD, reserve for doubtful debts. And this reserve for doubtful debts we are going to record today itself. Don't wait till bad debts. These provisions. So provisions we record on the basis of prudence concept. On the basis of prudence concept. And this is a prudence concept, beta. Anticipated losses. मेरा कोई पैसा डुबाने वाला है तो डुबाने तक रुको मत, आज ही लॉस रिकॉर्ड करो. और आज जब लॉस रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड लॉसेस का कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. रिकॉर्ड इट टुडे. एंड एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स कभी भी रिकॉर्ड मत करना. एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को कभी भी रिकॉर्ड मत करना. ओके, सो दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड आरडीडी based on prudence concept. In future you are going to solve problem on this, so इतना याद रखिए, तब हम लोग ये prudence concept को अच्छे से देख लेंगे. So prudence concept is nothing but provision for losses, future losses. तो फ्यूचर में आपको जो लॉस होने वाला है उसको आज ही रिकॉर्ड करो. सर मुझे मेरा पैसा डूबने वाला है तो आज रिकॉर्ड करूंगा, मैं किसी का पैसा डुबाने वाला ना. ना बेटा, ऐसी चीज भी दिमाग में मत आने देना. एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है. ओके, और ये पैसा तो डुबाने का नाम ही नहीं आता. आपने किसी का पैसा कभी डुबाना नहीं है. नियत से जाओ, कर्मा रिटर्न्स, इतना याद रखो. पर फिर भी आपने किसी का पैसा डुबाया तो उसको आज मत रिकॉर्ड करो. इतना ही ये कॉन्सेप्ट बताता है. ओके,
Yes, your messages are visible to me. J. J. Consistency. Consistency. Beta, which is lacking in your study is consistency. Okay. Consistency means is nothing but once you adopt the policy selected, whatever policy you selected for valuation, suppose there are two different ways. Okay. I already explained you. You have two options. Once you adopt one option, you have to stick to that option. Okay. Policy selected. Once policy selected, okay, must be applied year after year. That is called as consistency. Okay. So once you selected the policy, you have to apply it after year. Okay. So you cannot change it. There might be, you can change it, but when to change? When to change, beta? When to change? If required by law, sir. Required by law. Required by accounting standard. Required by accounting standard. And for better presentation. For better presentation. Okay. So for better presentation, so beta consistency is like wife. Once you selected, you have to live year after year. Okay. एक बार उसको select कर लिया तो फिर हमेशा उसी के साथ रहना है. So it is in India at least. हाँ. So this is a consistency. अभी now days are changing. तो वो अलग बात है. But consistency at least हमारे इसमें तो एक ही के साथ रहना है year after year. This is consistency. Okay. Easy છે. चलो. एंटीसिपेशन मतलब बेटा मन को लगना. एंटीसिपेशन का मीनिंग होता है कि मेरे मन को ऐसा लग रहा है, एंटीसिपेट कर रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है मेरा पैसा डूबेगा. यस, इसको बोलते हैं एंटीसिपेशन. श्रुत जैन. यस बेटा, बेटा ब्रेक देने वाला हूँ. अरे वेट वेट वेट, लास्ट है, लास्ट लास्ट. मटेरियलिटी लास्ट इज. 10 मिनट का ब्रेक देने वाला हूं. मटेरियलिटी. Important items. In simple language, important items. Yes, important items you have to record as an asset. For example, एकदम basic example लेता हूँ. Example, pen costing ₹50. Record as. Now this pen I am going to use for next 5 years. Pen costing, कितने का cost है उसका? ₹50. Should I record it as asset or should I record it as expenses? So asset, no expenses. Why? Because it's the materiality concept. अरे very small cost ना बेटा, ₹50. Immaterial. इसको क्या बोलेंगे? Immaterial. So this pen is immaterial. Okay. But वही मैंने vehicle लिया 10 lakhs का. So vehicle material item. Vehicle is material item. It is recorded as an asset. Okay. So pen भले आपने 1 साल से ज्यादा यूज किया, 5 साल के लिए यूज किया वो पेन, बट इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एक्सपेंडिचर. इट इज एक्सपेंडिचर. ओके. सो एसेट फॉर विच यू आर गेटिंग फ्यूचर बेनिफिट. ओके. चलिए, एकदम इजी है. मटेरियलिटी and realization concept I will explain you tomorrow in one basis, because realization means amount which is realized, and that is I'm going to explain you it in valuation model. So just write down. Oh sorry, this is K.
ए था ना, ए, एल इज रियलाइजेशन. Realization means realization concept. Okay. Revenue is recognized in case of goods when sold, and in case of services when rendered. So revenue, when should I call it as revenue is recognized? When I will book my income. If I sold goods, I transfer ownership to you. It is called as revenue recognition. And services, when I provide you services, otherwise I will record it as income received in advance. I will record it as income which is received in advance. Okay. So revenue is recognized when goods are sold, and services are recognized when services rendered. Then I will record it as revenue. Okay. So ये था हमारा all concepts in detail. बेटा this topic is थोड़ा सा technical chapter in your syllabus, but we do not have option. If ICI kept this chapter in your study material, we have to understand this chapter. So beta, what it talks about, it talks about only financial statements. While preparation of financial statement, these are universally accepted. यूनिवर्सली सब लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं. Dual aspect, universally accepted. Money measurement, everything which is measured in terms of money is only recorded. Sir, cost, yes, universally accepted. Going concern, universally. Foreseeable future है, तब तक बिजनेस सालों के साल चलेगा. इंडिया में भी वही बोलेगा, यूएसए वाला भी वही बोलेगा. ओके, सो ईयर आफ्टर ईयर ये हमें फॉलो करना है. कंसिस्टेंसी रहेगा या एवरीथिंग. दिस कॉन्सेप्ट्स आर देयर, and all accountants, while preparing this financial statement, they follow all these concepts. बस इतना ही था ये कॉन्सेप्ट चैप्टर में, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स. अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो हमारा 5 मिनट का क्वेश्चन होगा. एंड उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूनिट नंबर 4, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे. सो आफ्टर ब्रेक, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज, यस, यू हैव टू लीव वन पेज for this unit. I have completed this unit in detail. सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए ये मैं लिख के दूंगा. व्हाट आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस वी हैव कंप्लीटेड. प्लीज रिकॉल इट. इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स. सी, ओनली 5 मिनट्स. आई विल एक्सप्लेन यू. देखो, फास्ट में रिवीजन करवा के देता हूँ. टिक टिकी जी आ जाइए. आई विल रिवाइज इट बिफोर ब्रेक. चलो चलो चलो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ब्रेक को, देखना. Yes, start. So, sir, what are financial statement? Financial statement is nothing but P&L, balance sheet, cash flow statement, and notes to accounts. After Sanket's session, everything is very clear. P&L जो होता है वो performance के लिए होता है. Balance sheet is for position. Cash flow is divided in 3 activities: operating, investing, and financing activity. And last one is the notes to accounts, जिसमें policies लिखी जाएगी. Sir, concepts क्या होते हैं? Concept मतलब basis norms, इसके ऊपर concepts होते हैं, और basis और financial statement जिसके ऊपर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं concept. Sir, convention मतलब tradition जो follow करते आ रहे हैं. Sir, दोनों में difference क्या है? Concepts are universally accepted, conventions are not universally accepted. Sir, principles क्या होते हैं? Rules, selection of accounting policies while adopting financial statements. So rules which are adopted while preparation of financial statement. Sir, अभी बताइए concepts कौन से, conventions, और ये सभी को अभी explain कर दीजिए. ठीक है, ये हमें समझ में आया concept क्या होता है, convention क्या होता है, और प्रिंसिपल्स क्या होता है. अभी मुझे बताइए वन बाय वन कौन सी कॉन्सेप्ट सर यूनिवर्सली क्या अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट वन, सर यूनिवर्सली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन एंड वी हैव टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस. सो हमें बिजनेस के एंगल से एंट्रीज, हमें बिजनेस के एंगल से पास करनी है, नॉट ओनर के एंगल से. सर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये क्या बताता है? ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सर ह्यूमन वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है. सर तीसरी कॉन्सेप्ट क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. सर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. तो हर कंट्री में कहां से कहां तक ये आपका कट होने वाला ईयर. सर चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? सर फोर्थ वन इज अ accrual concept. So accrual concept से 2 चीजें ध्यान में रखनी है. Expenditure incurred is important, income earned is important. Expenditure incurred, income earned. Expenditure incurred, income earned. Expenditure paid is not important, income received is not important. Paid, और यही concept को लेके चलता है matching concept. So matching concept इसी का भाई है, accrual concept का छोटा भाई. वो क्या बताता है? जिस साल revenue recognize किया उसी साल को expenditure book करना है. Revenue recognize and expenditure book in the same year is called as matching concept. So ये भी समझ में आया. So going concern concept ये क्या बताता है? So business will continue for the
फोर्सेबल फ्यूचर, सो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, देयरफॉर वी रिकॉर्ड एसेट एट एक्विजिशन प्राइस, सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ गया, हमने जो प्राइस पे खरीदा था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आज की प्राइस पे हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग जो प्राइस पे लिए थे उसी प्राइस पे हम लोग लिखते, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सो एवरी डेबिट एज अ क्रेडिट, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चलता है। सो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेस को आज बुक करो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को बुक मत करो। सर इसी वजह से क्या होता है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये एक होता है। सो कंसिस्टेंसी, ईयर आफ्टर ईयर अपने सेम पॉलिसी को कंटिन्यू करना है। एक बार आपने जो पॉलिसी सिलेक्ट की और कब बदल सकते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिक्वायर्ड बाय फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। सो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को लिखने का। फॉर एग्जांपल एसेट वही बताओ, छोटी छोटी अमाउंट को एसेट मत बताओ, चाय का कप एसेट मत बताओ, तो ये भले आपके साथ 2-3 साल रहेगा, तो ये क्या होगा, दिस इज द एक्सपेंडिचर। सो इमटेरियल आइटम्स, एसेट जो रिकॉर्ड करेंगे वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेशन, कब सेल बुक होगा, कब बुक हमने गुड्स सोल्ड किए उस टाइम पे रेवेन्यू बुक करना है, या सर्विसेज मैंने जब पूरी कंप्लीट की उसी टाइम पे सर्विसेज को रिकॉर्ड करना है, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देता है। सो दिस इज ऑल फॉर 3 मिनट्स में पूरा रिवीजन हो गया फॉर ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। आई होप यू एंजॉयड। अभी हम लोग ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूनिट नंबर 4। थैंक यू। टेक अ ब्रेक।
Next unit, theoretical framework, unit number 4, capital and revenue expenditure and receipts. Okay. Sir, most important part of accounting subject and even for taxation, whether expenditure is capital expenditure or whether expenditure is revenue expenditure. Skip one page. एक पेज छोड़ दीजिए. Write down unit 4, capital and revenue expenditure and receipts. Capital and revenue expenditure and receipts. This is unit number 4. But I want now your next 45 minutes till 1:30. I'm going to take 1:15. ठीक है? We are not going to solve unit number 3. Very simple. Yes, I already told you in the last class that unit number 3 is combination of different concepts and it's very difficult. If I one by one, if I use terminology, you won't understand it today, but after understanding all topics, it will be very easy for you. By reading by your own is also possible, but read unit number 3 after whole accounting syllabus completed. Okay. Fundamental accounting assumptions are 3 assumptions: going concern, consistency, and accrual. So these fundamental assumptions, yes, you have to leave one page. एक पेज छोड़ देना आप यूनिट नंबर 2 के लिए. कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं कल लिख के दूंगा आपको थ्योरी में. अभी मुझे आज ये पोर्शन कंप्लीट करवाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, you can write it now. See, have you written better name of this chapter? Expenses are divided in 2 parts. Capital expenditure versus revenue expenditure. On the first day, I explain you the concept of, no, not yet, sorry. Capital expenditure means asset. Now, how to define asset? And this is revenue expenditure means expenditure which you transfer to profit and loss account. Asset means benefit. You want benefit is long-term benefit that you are going to receive. So benefit you will receive it in future. It's a long-term benefit. And revenue expenditure benefit is only for current year. Current year benefit, it is called as expenditure. So sir, if we bought one vehicle, we have one plant and machinery, we purchase some furniture, we purchase some land and building, it is called as capital expenditure. Example, land and building, plant and machinery, furniture, or last one is vehicle. So these are some capital expenditure.
Revenue expenditure. I paid salary for that year. Salary to employee. Advertisement expenses. Repairs and maintenance. This is called as revenue expenditure. Revenue expenditure means which we transfer it to profit and loss account. And capital expenditure means which are shown on the asset side. You got the difference between capital expenditure and revenue expenditure? So friends, basically, this unit is very simple unit. This unit is simple unit, but students are finding this unit as a complicated. Why? Because in real life, income tax officer will say, this is not revenue expenditure. This is a capital expenditure. Always, income tax officer always try to tell you capital expenditure. Why? Because then expenditure will be less and profit will be more. And expenditure will be less because you are showing it as an asset. And if you are showing it as an asset, your expenditure will be less and your profit will be more. And assessee means a person who is paying tax. A person who is paying tax is called as assessee. He is always trying to tell you this is a revenue expenditure because he wants that expenditure to show it as a revenue expenditure. So if expenditure is more, profit will be less, and profit less means tax less. So there is always a fight between income tax officer and assessee that this expenditure is a revenue expenditure or capital expenditure. Friends, therefore, we have to understand this difference between capex. Now I will call it as capex or revex. Capex means capital expenditure and revex means revenue expenditure. Okay, capex ये word याद रखना. ठीक है? So capital expenditure means what? Yes. Now you tell me it in the comment section. Capital expenditure means what? It is an asset or yes, बेटा जल्दी से define कीजिए. जल्दी से डिफाइन कीजिए बेटा. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे बताए जाते हैं? यस बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे बताए जाते हैं? टेल मी फास्ट. वेयर टू शो कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलो आज का इंटरेस्टिंग सेशन है. अभी बहुत एक थ्योरेटिकल सेशन सर ब्रेक के पहले बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ था. अभी हम लोग है ना मजा करेंगे. अभी एंजॉय करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले. कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एक्सपेंसेस. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Okay, capital expenditure is an asset for long-term benefit, and revenue expenditure we will record it in the P&L account. Very good, very good. ठीक है सर. Now something which is easy. अभी थोड़ा इजी स्टार्ट हो गया सर. अभी आज से अकाउंट थोड़ा इजी लेवल पे. वो पहले 2 यूनिट यार मैं क्या करूँ, वो थे सिलेबस में. वो डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है, पर हमें वो करने ही पड़ेंगे. और मैंने आसान करवा दिया ना आपको. थोड़ा थियरी है उसमें. थियरी होने के बाद कैसा अकाउंट्स में थियरी आ गया तो थोड़ा बोरिंग पार्ट हो जाता है. हाँ, पर अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से आने लगे सब कॉन्सेप्ट्स. कन्वेंशन सर ने पूरा एक्सप्लेन किया. कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. और थोड़ा सा घर पे पढ़ लेना, वापस से लेक्चर देख लेना नहीं समझा तो. ओके ओके ओके. चलो. नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. now very important point. You can write this. Consideration in determining capital and revenue expenditure. Second question. Consideration in determining capex or revex means how you are going to identify whether this is capital expenditure or revenue expenditure. Number A, nature of business. Write down. Nature of business. Now see, very important. Furniture. I am a chartered accountant by profession. If I bought furniture, if I purchase furniture, then beta
For me, it is an asset or expenditure, revenue expenditure. Yes, tell me. As a chartered accountant, if I buy one furniture, so you only tell me, yes, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सबसे पहले आंसर दिया श्लोक ने. डब्ल्यूआरओ वाले जीत गए इस बार. डब्ल्यूआरओ वाले अभी आप ये देख रहे हैं, अभी हम लोग फाइट करेंगे. डब्ल्यूआरओ, एनआरओ, सीआरओ. चलो, नाउ देयर विल बी अ कंपटीशन. नाउ यू विल टेल मी वेदर दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो फर्नीचर, एसेट, 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 कैपेक्स, 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 कैपेक्स. एवरीवन इज सेइंग कैपेक्स एक्सेप्ट निहाल अत्रेजी. निहाल अत्रेजी एनआरओ वाले, ही इज एक्सप्लेनिंग इट एज रेवेक्स. अरे भाई फर्नीचर रे, फर्नीचर क्या कर रहा है रे? फर्नीचर लॉन्ग टर्म है ना. हर महीने फर्नीचर बदलता हूँ क्या बेटा? क्या ससुर जी की लॉटरी लग गई क्या? तो नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होएगा? नेचर ऑफ बिजनेस बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्नीचर बार बार कौन बदलता है? सो फर्नीचर विल बी यस एसेट फॉर मी, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड वही फर्नीचर डीलर के लिए, सपोज नाउ यू आर अ फर्नीचर डीलर. So for you, it is a regular activity, buying and selling of furniture. So for you, it is not asset. For you, it is revenue expenditure. So nature of business. For a trader dealing in furniture, purchase of furniture is revenue expenditure. Sir, already explained you. And for others, other trade, it's a capital expenditure. Now we got this concept. So we have to see nature of business while dividing it. So furniture for me, it is an asset. For furniture dealer, it is an expenditure. एक बार वापस हिंदी में बताता हूँ. देखो, मैं सीए हूँ. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फर्नीचर, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, तो मेरे लिए बेटा फर्नीचर एसेट है. मैं बार बार नहीं बदलता रहे उसको. तो वही सपोज सपोज मेरा फर्नीचर डीलर है जो गुड्स बाय करता है और गुड्स बेचता है, फर्नीचर लेन देन करता है. तो फर्नीचर लेता है, बेचता है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या होएगा रे? तो फर्नीचर उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अरे उसका डेली एक्टिविटी है वो, परचेस करना, सेल करना. ओके, सो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गॉट दिस कॉन्सेप्ट? फर्नीचर डीलर का एग्जांपल याद रखना. एग्जांपल तो बाद में आपको याद आएगा. फर्नीचर डीलर वर्सेस सीए, सर ने एग्जांपल दिया था. नेक्स्ट, recurring nature. Beta, these are only some points, huh, beta. It is not always all these points. These are the, yes, you can treat it as one of the point for consideration for capex versus revex. Okay, these are not final considerations. Again and again I am telling you, these are not final considerations. These are the सिर्फ road बताते हैं कि हाँ ये point consider करो. Recurring versus non-recurring. Okay, now recurring. Now monthly salary. Now monthly salary you are paying. So this is called as recurring expenditure, revenue expenditure. Asset हम लोग रोज बाय करते हैं क्या? नहीं. So it is a capital expenditure. It is a capital expenditure. Okay. It is one of the point. हाँ, अभी आप लोग बोलोगे see. Now why I am telling you this is one of the point? Try to understand. Now salary or asset you can bifurcate in this way. But for example now painting. रोज पेंट करता है क्या कोई? हमारे इधर 4 साल में एक आध बार पेंट होता है. आपके यहाँ पे कब? अभी इधर कुछ बच्चे हैं बेटा इन इंडिया, महाराष्ट्र, इन माय क्लासेस. तो मैंने उनको पूछा भाई पेंट कितने महीने में करवाते? सो पेंटिंग वो बोलते सर एवरी 8-10 महीने में हमारे पास पेंटिंग होता. भाई इतना कौन सा पैसा ऊपर आ रहा है? हाँ, तो पेंटिंग मेरे घर में तो बेटा 4-5 साल, मुझे तो याद भी नहीं है, हमने पेंटिंग 12-13 साल, पुराने घर, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम. तो वहां पे जब मेरा जो पैदाइश हुआ था तब हमारे यहाँ पे पेंटिंग बेटा 8-10 साल में एक आध बार होता था. ओके, पेंटिंग मतलब वही छोटे बच्चे आके पेंट करवा देते, वही पेंटिंग हो जाता था. सो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पेंटिंग, ये हमारे यहाँ पे पेंटिंग जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बोला जाएगा, बिकॉज पेंटिंग ये इसमें नहीं आता है. सो पेंटिंग इज एक्सेप्शन. ओके, दीवारों को पेंट लगाना इज एक्सेप्शन. सो भले वो डेली बेसिस पे नहीं होता रहेगा, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे. सो पेंटिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ओके, सो पेंटिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. भले वो एक ही बार होता है 5-6 साल में, नॉट डन रेगुलरली. हाँ, बट दैट क्राइटेरिया डोंट अप्लाई फॉर पेंटिंग एक्सपेंसेस. हाँ, एसेट, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, दिस इज नॉट अ फाइनल क्राइटेरिया. ओके, ठीक है, चलो. सो रिकरिंग होगा तो रेवेक्स. एंड नॉन रिकरिंग बार बार नहीं. रिकरिंग मतलब क्या? रिकरिंग मतलब बार बार. एंड नॉन रिकरिंग मीन्स एक बार, बार बार नहीं होता. यस बेटा, पेंटिंग कम्स अंडर मेंटेनेंस.
हाँ, so this is exception, paint expenses. Purpose of expenses. Purpose of expenses is the next point. So you will decide this also. Purpose of expense. Normal maintenance, revenue. Major repairs, capital. Okay. Okay. Purpose. Repairs. Normal versus major. नॉर्मल होगा तो रेवेक्स, मेजर होगा तो कैपेक्स. पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर रिपेयर्स, नॉर्मल, रेवेक्स, मेजर, कैपेक्स. पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर रिपेयर्स, नॉर्मल, रेवेक्स, मेजर, कैपेक्स. नेक्स्ट वन डी. इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी. रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी. Revenue generating capacity. So if it generates revenue in only current year, so due to that expenditure, you generate revenue in only in that year. So that is REVEX. And for long term period, because of this expenditure, you incur income for long term period, then this is CAPEX. Then this is CAPEX. Revenue generating capacity. Revenue generating capacity. And last point. बेटा दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स. अब भी आके गया है. मटेरियलिटी. हाँ, अभी आप लोग बताइए. मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट. सो दिस एक्सपेंडिचर, इफ इट इज इमटेरियल, if expenditure is immaterial and if it is material, immaterial होगा तो क्या, और material, material मतलब important, immaterial means not important in simple language, and material means important. Tell me, if not material, immaterial, then immaterial. Very good beta. Immaterial revex and material capex. Very good, very good. Anshika, very good beta. Yes, Varnika, I will explain you repairs under normal and major. Now we are going to solve some questions. So we are going to solve these questions now. Don't worry. So in study material, you have some questions. You can watch my previous session. I uploaded already that lecture of unit number 4. All details में. Yes, तो आपको वो मिल जाएगा. Unit number 4, chapter 1. And now we are going to see some past examination questions. So these are some criteria. Study material you can read by your own and you will get the answers. Okay. In Friday section, I will give you some homework for Saturday and Sunday. Saturday and Sunday के लिए मैं कुछ homework देने वाला हूँ. My past recorded lectures you have to watch. I will tell you exactly which lecture you have to refer. ठीक है? तो वो आपको देख के आना है on Monday. चलिए. So let's start some questions now. Ready for competition बेटा? Okay. So अभी आपका कंपटीशन होगा. देखते हैं सबसे पहले तेज आंसर कौन देता है. सबसे तेज आंसर्स देने वाले लोग कौन है. लेट्स चेक फॉर चैप्टर नंबर 4. लेट्स सी.
2 marks question. I will explain you with logic each and every expenditure, but you have to answer me. Yes, competition के लिए शुरुआत होगी. Let's see ERO, WRO, who is answering? Overall means repairs. Repairs expenses incurred on second-hand machinery purchased. Second-hand machinery purchase are revenue expenditure or capital expenditure. Write down fast. First one is a revenue expenditure or capital expenditure. False or true? So first answer by ERO. So ये आंसर ERO के बच्चे ने दिया है. फर्स्ट विनर ERO काजी भाई ERO से है. Remember, repairs on second-hand machinery is mandatory capital expenditure. कौन सा expenditure? Capital expenditure. Don't want only answer. I want with logic, beta. Next time with logic I want. It's a capital expenditure. So it's a false answer. Revenue expenditure. Okay. Yes, because second-hand machinery, if you take repairs on first-hand machinery, you might treat it as revenue expenditure. But when you bought some second-hand machinery, for obvious, you have to do some major repairs cost. Why you have to incur that? Reason I will give you. It's for long-term benefit. You will derive this benefit in long term, and that's why this is overall expenses. It's called as revenue, nahi, capital expenditure on second-hand machinery. So you can write it in your notes. Number 3, examples, which you found difficult one. Repairs. Normal repairs on first-hand machine. New machine. First-hand means new machine. And second-hand machine. So this is how you have to write your notes. Revex. And this is capex. Capex versus revex. Yes, beta. It is for long-term benefit. So repairs, write down this. Repairs is for long-term benefit on second-hand machinery. Okay, written. In accounting, all businesses they will aspect. ये तो मैं ही बता देता हूँ. True. Now this one. Major repair charges, including replacement of worn out part before using second hand car. अरे same answer ना. True. ये नहीं पूछेगा मैं आपको. So second answer is true. Second का answer is true. Capital expenditure on second hand machinery. हाँ. The gain from sale of capital asset need not be added to revenue to ascertain the net profit of business. Now this is better doubtful, because IC has given the answer true, but according to me, no, IC has given the answer false, but according to me, it is included in the net profit. So please skip question number 3.
because it's a doubtful. I will give you clarity afterwards. So 3 number को हम लोग skip करते अभी फिलहाल. Question number 4. An expenditure intended to benefit the current period is revenue expenditure. So tell me the answer of 4. 1, 2, 3. All 3 answers. Question number 4. Who is going? And write down, while answering, write down 4, 1, 2 true or false, or 3 true or false. Yes. Let's see who is answering. Chalo. 4, 1, 2, 3. 4 ka 1, 2, 3. Please note down your question number. While answering, please note down your question number. Question 4, 1, then 2 and 3. In one answer, हाँ बेटा एक ही साथ देना है तीनों के आंसर. 1, 2, 3 साथ में देना है. 1 is an expenditure intended to benefit the current period is a revenue expenditure. Sale of furniture should be credited to sales account. And third one is expenditure which results in acquisition of permanent assets of enduring benefit to the business is a capital expenditure. Question 4, 1, 2, 3. First answer all 3 questions together by Miss Harsimran Kaur. Harsimran Kaur NRO. ये मैडम ने सबसे पहले आंसर दिया है. हरसिमरन. ओके. सो सबसे पहले इस बार आंसर्ड बाय एनआरओ स्टूडेंट. हरसिमरन ने आंसर दिया है. वेरी गुड. Expenditure intended to be benefit for the current period is revenue expenditure. Correct. Yes, beta. For that period, already explained you. Sale of furniture is credited to furniture account. कौन से account को? Furniture account को, not sales account. So when you sell furniture, furniture goes out, not sale. And expenditure which results in the permanent asset of enduring benefit to the business is a capital expenditure. Yes. So enduring benefit already explained you. This is a capital expenditure. True. चलो. Now fifth का आंसर दीजिए. Fifth का आंसर. Fifth का आंसर. Fifth का आंसर. बेटा एनआरओ मीन्स नॉर्थ वाला स्टूडेंट. राहुल वो एसआरओ है. एसआरओ मीन्स साउथ. You are from south, beta. NRO from north, WRO from west, ERO from east, CRO from central. Fifth number answered by CRO. Who answered it? CRO student answered it. Okay, now I will write this. Yes, write down in your example list. Yes, beta, wages. Normal wages is better REVEX, revenue expenditure. Normal wages to employees. And wages on installation. See beta, installation or erection or construction of an asset. So wages किसको दे रहे हैं वो चेक करो. Goods बना रहा है. Normal, who produces goods? Normal मतलब who produces goods? Who produces goods is a revenue expenditure. But on installation, erection or construction of asset, it is capital expenditure. It is capital expenditure. समझे? When it is creation of the asset. Why it is capex?
Because creation of asset. When you create asset, in that case, wages is a capital expenditure. So this is tool you are producing. So machinery you are producing. Tool matlab machinery, and it is a true answer. Sorry, it's a true. Yes, it's a capital expenditure. Okay. ओ सो सीआरओ वाले का आंसर फॉल्स आया था, गलत हो गया भाई साहब। आयुष 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 मनीष जैन ने पांचवे का आंसर ट्रू दिया। मनीष जैन फ्रॉम एसआरओ। ओके, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। इट्स अ yes, it's a capital expenditure. True answer. True. Okay. So correct answer is true. We have done two example, repairs and wages. Wages on normal goods, revenue expenditure, but wages on asset, it's a capital expenditure. Okay. True है, true है, true है. So first by SRO student. चलो 6 नंबर का आंसर दीजिए। 6 नंबर का आंसर दीजिए। 6 नंबर। Correct answer by Shivam Savran. CRO students. Shivam. So Shivam, you answered it correctly. First is true and second one is false. See, now what is the difference? Expenditure incurred on whitewashing of factory building after every 6 months. Sir, it's a regular expenditure. Whitewash. वो चूना लगाते हैं ना बिल्डिंग, मतलब व्हाइट वॉश करना, थोड़ा मतलब कलर डल हो जाता है तो व्हाइट वॉश करवा देते हैं. सो व्हाइट वॉशिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या होता है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो इट्स अ रेवेक्स, इट्स अ ट्रू. ओके, रिकरिंग इन नेचर. एंड worn out part, it's not beta major worn out part, it's a small part. ओके, नाउ ब्रेक लाइनर होते आपके, ब्रेक के पैड्स होते, साइकिल को ब्रेक पैड होते देखो बाजू में. ओके, सो आपने वो बदलवा दिए. इट्स अ worn out पार्ट, मतलब खराब हुआ था, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो हाँ, मेजर worn out पार्ट होता ना, मेजर worn out पार्ट, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब इंजन ही बदल दिया, ओ इंजन बदल दिया, सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट्स अ नॉर्मल worn out पार्ट. ओके, सो here write down replacement of worn out part. worn out मतलब खराब हुआ, worn out मतलब जो रेगुलर यूज किया है, इसको बोलते हैं worn out. Okay, worn out means which is regularly used and now efficiency down. बेटा ब्रेक का एग्जांपल याद रखना, ब्रेक पैड्स ऑफ साइकिल, रेगुलर worn out part and major worn out part. Regular part, major part. मेजर पार्ट क्या है? कैपेक्स, and this is revex. कैपेक्स वर्सेस रेवेक्स. ठीक है, चलो. नाउ टुडे डू वन थिंग, you solve other questions of study material. Now question 6 tak I told you. Now remaining questions we will cover it tomorrow. So tomorrow is the last day for this unit, plus some different units I am going to take. What is contingent liability, contingent assets? Tomorrow means on Friday. So Friday को हम लोग other questions को cover करेंगे. Till that time I am giving you time to read study material unit number 4
एंड अभी तो भूख भी लगी रहेगी, सो जल्दी से खा लीजिए। 1:15 तक हुआ है आज, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई। हैव यू एंजॉयड बेटा? कौन सा इजी था चैप्टर? बोथ चैप्टर्स आर इजी या यूनिट 4 इज इंटरेस्टिंग? कौन सा इंटरेस्टिंग है, यूनिट 2 और यूनिट 4? चलो अभी रुकते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई। सो वी विल वेट फॉर द डे, sincere students till last minute. Many students are sitting for more than 2 hours patiently. Yes. बेटा काव्या कुमारी, वेयर यू आंसर्ड, आपने जहां पे कमेंट किया है ना, उधर ही आंसर देना है आपको। यस, यूनिट 4 इज मोर इंटरेस्टिंग। बेटा शुरुआत से हमें बहुत पढ़ाई करना है। वी वॉन्ट वर्क इन लास्ट 2 मंथ्स। पहले तो मैं ये बोल देता हूँ आपको कि लास्ट के 2 महीने में हमें बिल्कुल स्टडी नहीं करना है। फ्रॉम डे 1 वी हैव 6 months in hand. So everyone will minimum you will study. See, I am not with you in your physically, मैं वहां पे नहीं हूँ, but virtually I am there. And if you want success, you have to work very hard from day 1. If you work in last 2 months, it is of zero use. And first attempt is always best. I would say attempt because it is exam. Don't call it as attempt. Attempt उनको लगते जो फेल होते हैं। हमें अटेम्प्ट लगने नहीं वाली, हम लोग एग्जाम देने वाले। एंड एग्जाम देने वाले कभी बेटा फेल नहीं होने वाले, हम लोग पास ही होने वाले। अब तक हमने कभी फेल्योर देखा नहीं है, और सीए में बाकी भी फेल्योर नहीं देखेंगे इफ यू वर्क हार्ड फ्रॉम फर्स्ट डे। सर फेल्योर हुआ तो क्या करना है, वो तो बात की बात, पर फेल्योर का सोच क्यों रहे हो? मैं इतनी पढ़ाई करूंगा तो मुझे इंस्टीट्यूट चाह के भी फेल नहीं करेगी, तो इतनी पढ़ाई कीजिए। और मैं हूं ना साथ में, दूसरी फैकल्टीज भी है, विल गाइड यू। सर फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। साइकिल चलाई थी आपने जिस दिन पहले, कितनी बार गिरे थे देखो, 20-25 बार गिरने के बाद उठ के वापस किया था। और ये गिरना यही 6 महीनों में है, ये हमें 6 महीने के बाद गिरना नहीं है, ये याद रखिए। जून एग्जाम में हम लोग पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। टारगेट इज नॉट ओनली 200, टारगेट इज 300 प्लस सर। I will achieve 300 plus का target, and at foundation level I'm telling you it's very easy. Don't waste your time and get success. Okay, so हमें पढ़ाई करते रहना है। फ्राइडे तक हमें पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 4 हम लोग करते आएंगे, 5 नंबर और 6 नंबर हम लोग फ्राइडे को देखेंगे, 5, 6, 7। सो टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। यस, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू।